नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टीपीएम अवेयरनेस सेशन पार्ट 2 में। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फर्स्ट पिलर कोबेत्सु काइजेन। दैट इज काइजेन मीन्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड आइडिया कैन चेंज द वे यू वर्क। सो इस पिलर का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज अंडरस्टैंड द लॉसेस, एबिलिटी टू कैलकुलेट overall equipment efficiency and reduce losses by kaizens, reduce manufacturing cost by carrying out kaizens, aim realizing for high production efficiency by eliminating 16 major losses. So this pillar is majorly focused on the 16 major losses in the organization, and the method is like that: recognize of 16 major losses, overall equipment efficiency, material, die, jig, tool and energy required per unit calculation and setting target for the above, analysis of phenomena and review of the associated factors, execution of PM analysis through pursuit of what the equipment and production must be. And ये एक्टिविटी करने वाले लोग हैं स्टाफ एंड सेल लीडर्स। Kobetsu Kaizen, this pillar pursues efficient equipment, worker, material and energy utilization, that is extremes of productivity, and aims at achieving substantial effects. This pillar works on reducing, eliminating the 16 major losses. The basic of these activities is to enhance and demonstrate the technological, analytical and Kaizen powers of the engineers and operator engaged in this activity. So ये 16 major losses कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। 16 kind of losses, so that is related to availability, productivity and production losses. So availability losses, machine failure losses, setup and adjustment loss, tool change, startup loss, minor stoppages, speed loss, defect and rework and shutdown. तो ये टोटल 8 लॉसेस जो है दैट इज रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी लॉसेस। 5 प्रोडक्टिविटी लॉसेस, ये कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट लॉसेस, मोशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिक्स एंड एडजस्टमेंट। एंड द 3 प्रोडक्शन लॉसेस आर लॉस ऑफ एनर्जी, डाई, जिग एंड टूल लॉस एंड यील्ड लॉस। अब हम दिस इज द लॉस स्ट्रक्चर ड्यूरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जो 16 मेजर लॉसेस है, अगर आप ये लॉस स्ट्रक्चर डायग्राम देखेंगे कि प्रोडक्शन में कौन कौन से लॉसेस है, तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 5 मेजर लॉसेस ऑब्स्ट्रक्टिंग मैन पावर इफिशिएंसी की। जो मैन पावर रिलेटेड लॉसेस है, जो एक्सक्लूडिंग मैन आवर्स सपोर्टेड बाय अदर डिपार्टमेंट, लाइक लॉस नंबर 9 मैनेजमेंट लॉस, लॉस नंबर 10 ऑपरेटिंग मोशन लॉस, लॉस नंबर 11 लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस, लॉस नंबर 12 लॉजिस्टिक लॉस एंड लॉस नंबर 13 मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट लॉस। These all affected on operating man hours, loading man hours, net operational man hours, effective man hours and valued man hours, which is defect in man hour losses. Then the 8 losses that is affecting on the scheduled downtime, that is shutdown loss, equipment failure loss, setup and adjustment loss, cutting blade and die, jig and tool loss, startup loss। ये 4 losses है। अदर डाउन टाइम वाले माइनर स्टॉपेज, स्पीड लॉस एंड डिफेक्ट एंड रिवर्क लॉस। तो ये सारे जो लॉसेस है दैट इज वर्किंग आवर, लोडिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम, नेट आवर टाइम एंड वैल्यूड ऑपरेशन टाइम के ऊपर ये अफेक्ट करते हैं। सो दीज आर 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो दीज आर द 8 मेजर लॉसेस दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इक्विपमेंट इफिशिएंसी, that is clearing, checking, awaiting instruction, awaiting material, awaiting personal disturbance, quality confirmation and all these losses are related to this। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एनर्जी लॉस है विच इज स्टार्टअप लॉस, ओवरहेड और
लोड लॉस एंड टेम्परेचर लॉस। उसके बाद में जो डाई टूल एंड जिग लॉस है, दैट इज इफेक्टिंग ऑन इफिशियंसी ऑफ मटेरियल, डाई, जिग, टूल एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट एज पर द प्रोडक्शन यूनिट। एंड जो यील्ड लॉस है, दैट इज रिलेटेड टू डिफेक्ट, क्वालिटी लॉस, स्टार्टअप लॉस, कटिंग लॉस, लॉसेस इन वेट, लॉसेस इन overage, that is reflected to the input energy, effective energy and input material, number of quality of products and weight of qualified products। अब हम बात करेंगे कि what is the relationship between 6 major losses on equipment and OE। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो उसमें इक्विपमेंट है जिसमें लोडिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम, नेट ऑपरेटिंग टाइम एंड वैल्यूएबल ऑपरेटिंग टाइम के बारे में हम जानकारी लेते हैं। और जो 6 मेजर लॉसेस है वो है इक्विपमेंट फेल्यूर, सेटअप एंड एडजस्टमेंट, आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेज, रिड्यूस स्पीड, डिफेक्ट इन प्रोसेसेस एंड रिड्यूस स्पीड। So there is a calculation of availability, performance and quality. Availability means loading time minus downtime divided by loading time into 100, that is in the percentage. Performance efficiency is theoretical cycle time into process amount divided by operating time into 100, that is again in percentage. And rate of quality products, that is equal to proceed amount minus defect amount divided by proceed amount into 100, that is again in the percentage। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी OEE अगर हमें कैलकुलेट करना है, सो दैट इज डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड रेट ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये सारा के पिलर में हम डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद द ऑल 16 लॉसेस डिटेल, इन डिटेल में हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड बी इन टच एंड लेट्स वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।